So let's go further. We don't have too much left now, so don't worry, it will wrap up soon. तो जैसे मैंने बताया था ना कि some people divide it in 8 steps, some people will call them by different names, some people call them by 6 steps. तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं. तो कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं. देखो, एम्पैथी, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट. ठीक है. देयर आर 3 वर्टिकल्स हियर: इंस्पिरेशन, आइडिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. इंस्पिरेशन में यू गेट एन इंस्पिरेशन बाय दीज 2 steps. देन आइडिएशन. These are more or less the same steps that we get. Implementation. Then other user-centric techniques. So there are other techniques like conception. Concepts पे हमने बात की थी अभी. Evaluation and optimization. There are other techniques. Then user analysis, user research, market research, and so on. And then design. तो अलग-अलग तरीके से user-centered design करके भी कुछ लोग बोलते हैं इसको. User-centered design is nothing but design thinking. Now here is a quote from a beautiful, wonderful guy, Dieter Rams. Dieter Rams is one of the top-notch designers in the world. He designed the best products ever. Baron and a lot of big companies he worked with. He worked with furniture companies and so on. He's from Europe, I believe, and he is very old now. And throughout his life, he has been designing things, and he got a lot of awards. And he wrote some books. There is documentary on him. So Dieter Rams says that design is a thinking process that starts in the head and with sketches. Thinking cannot be done by a computer. So Dieter Rams emphasizes the use of paper and not computer. Emphasizes the use of doodling and not computer. Emphasizes the use of sketching on paper and not computer. Computer is evolving, and we have tools now, Mural, as I mentioned, some of the tools that can help you in design thinking process. But this guy always starts with a pencil, always starts with, like artist. He will take a paper and then he'll start the design. And he designed one of the most innovative products possible in the world. In Google for him, he is very, very famous. Then we'll see some principles from Dieter Rams himself, good design principles versus bad design. So how does a product make you feel? तो कोई product अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? कस्टमर्स डिसाइड करेंगे. जो यूज करेंगे वो बताएंगे ना. हम नहीं बता सकते हमारा प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, कस्टमर्स बताएंगे. तो किस तरह के कमेंट्स देते हैं कस्टमर, ये देखो, ये पढ़ के हम भी रिलेट करेंगे. हम कोई फ्लॉलेस ऐप यूज करते हैं, इट वाज मेड फॉर मी, वो बोलते हैं. दे थॉट ऑफ एवरीथिंग, दे रियली नेल्ड इट, राइट. इस तरह के कमेंट्स आते हैं कस्टमर्स से जब वो ऐप यूज कर रहे हैं. तो अगर इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब आपका ऐप अच्छा है, मतलब उसका डिजाइन अच्छा है, इट हैज वेल डिजाइन. नहीं तो आपको पता है किस तरह के कमेंट्स आते हैं. आई डोंट हैव टू से देम. ठीक है. बट so how does a product make you feel? It tells by the face of the customer. It will show off by the comments that they make by using their app. इसलिए यूजेबिलिटी टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है. यूजेबिलिटी टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? यूजेबिलिटी टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम ही अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं. यूजेबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं वो प्रोसेस. आप बिहाइंड द ग्लास देख रहे हैं while the customer is bitching about your app or saying good words about your app while he's or she is using or navigating your website or product or hardware product or whatever. तो वो हम छुप के देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं. दैट इज यूजेबिलिटी टेस्ट एक्चुअली. ठीक है. तो उससे पता चलता है. Anyway, so beautiful principles by Dieter Rams himself, one of the world famous designers. ठीक है. What are the principles of good design? Good design मतलब क्या, कैसे रेट करोगे आप good design? So some of the key guidelines are given here. Good design is innovative. तो ये 10 principles पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो products use करते हैं अपने day to day life में, not just apps I mean, but even physical household products that we have like fan or geyser or toaster or table or chairs or toys that are used by kids and other sculptures and everything. In general, all physical and software products have to follow these principles. If they follow these principles, they can be called as good design, well designed. You can, let's go through them quickly. So good design is innovative. Good design makes a product useful. It doesn't reduce the usability, it improves usability. Then it's aesthetic. Good design makes you feel good. जैसे परफ्यूम लगाता है कोई,
तो आपको एक ब्यूटी का एहसास होता है. यू लुक एट अ गुड पेंटिंग एंड यू फील, यू नो, योर कॉन्शियसनेस इज लिफ्टेड, यू फील अ लिटिल elevated, you feel happy. So looking at a good design, you feel happy. So you see most of these principles or all of these principles followed by Apple products or other products which we call them really really well designed. तो जो वेल डिजाइन प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये फीचर्स हम देखते हैं ऑलरेडी. गुड डिजाइन मेक्स अ प्रोडक्ट अंडरस्टैंडेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंफ्यूज नहीं करेगा वो यूजर को, अंडरस्टैंडेबल होता है. इट मेक्स इट इजी, मिनिमलिस्टिक डिजाइन होता है. गुड डिजाइन इज अनऑब्ट्रूसिव. अनऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है मिनिमलिस्टिक. मतलब 4 बटन से काम चलेगा तो 4 ही रहेंगे वहां पे, 10 बटन नहीं है. आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि 10 बटन से और हम एक ही यूज करते हैं उसमें से, और हमेशा कंफ्यूज होते हैं कौन सा किससे क्या होता है. बस एक सीख लेते हैं हम और टक 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 अपना काम करते रहते हैं. बाकी 9 बटन फालतू है. फालतू है ऐसा नहीं है, बट इट्स नॉट वेल डिजाइन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. देन गुड डिजाइन इज ऑनेस्ट. So designer is speaking his heart and mind out through the design. It's honest. It's not hiding anything. It's not to confuse you. It's being honest. Good design makes a product long lasting. Very very important. ये कोई बोलेगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी होता है. Long lasting भी बनाता है उसको because of good design. Because people tend to take care of it, isn't it? एप्पल को लोग जीप से साफ करते हैं. एंड दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय स्टीव जॉब्स व्हेन ही डिजाइंड एप्पल फोन. He said in one press conference that people will stick out their tongue and lick it on their iPhone and then clean it. इतना प्यार करते हैं लोग अपने आईफोन से. Why? Because it's very sleek, it's very nice, right? So good design is long lasting. Good design is thorough. Thorough का मतलब होता है well thought of. जल्दबाजी में नहीं बना दिया है या एक स्टेप करके नहीं बना दिया है, right? It's well thought of. Even if it took 6 months, it took 3 months, it may have taken 3 years to design something. It's thorough. It's well thought of. Every possibility is thought of and then reduced. जैसे अच्छे बुक्स कैसे मिनिमलिस्टिक होते हैं, पहले राइटर्स 1000, 2000, 10,000 वर्ड्स लिखते हैं, फिर कट करते जाते हैं उसको. कट होता है, कट होता है, कट होता है, फिर छोटा सा लास्ट में मिनिमलिस्टिक बुक बनता है उसमें से. ऐसे ही मूवीज का भी होता है. बहुत लोगों को पता होगा कि जितना 3 घंटे का फुटेज हम देखते हैं उतना ही शूट होता है क्या. So they may have even shot 50 hours or 100 hours or 36 hours or 10 hours. We don't know, right? So it's well thought of. They think through all the possibilities, then they mix and merge and they cut through scenes and so on and so on. So thorough process होना चाहिए. That is good design. Then environmental friendly. Very, very nice. Good design is not disturbing the environment. Good design is not made out of bones, for example. Just kidding. The idea is it should be environment friendly. It should not harm the environment in any way. Good design is as little design as possible. Again, minimalistic का आ गया पॉइंट यहाँ पे. अनऑब्ट्रूसिव मतलब उछल उछल के आपको डिजाइनर कुछ दिखा नहीं रहा है, जितना नीडेड है उतना दिया है उसने. ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है आपकी बाकी प्रोसेस. इट्स अफोर्डेबल, इट्स अनऑब्ट्रूसिव. एंड लिटिल डिजाइन एज पॉसिबल इज मिनिमलिस्टिक, कि जितना नीड है उतना ही शो ऑफ है उस डिजाइन में, उससे ज्यादा नहीं है. इट्स वेरी स्लीक, इट्स वेरी ट्रिम. So these are the principles by good design by Dieter Rams himself. A good quote here to emphasize the importance of bad design. कि bad design क्या होता है? Bad design is simply great imagination without wisdom. है ना? किसी ने कुछ सोच लिया अच्छा सा ताजमहल बनाएंगे, लेकिन दिमाग नहीं चलाया उस पर, प्रोसेस नहीं किया, थिंक थ्रू नहीं किया, उसको एक्शनेबल नहीं किया, उसको डिजाइन थिंकिंग नहीं लगाया, तो इट्स अ बैड डिजाइन. यू विल end up with a bad design. You imagined something very nice, but you didn't apply the process or the wisdom to it. So you will typically end up with a. Now, what is not a good design? अब हमको पता है. जो उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, दैट इज अ बैड डिजाइन, है ना. जो 10 प्रिंसिपल्स के बाहर जाता है, दैट इज बैड डिजाइन. बट लेट्स सी स्टिल सम एग्जांपल्स. हमको पता है वैसे कौन कौन से वेबसाइट्स अच्छे हैं, कौन से अच्छे, हम तुरंत फील कर लेते हैं, राइट. कुछ प्रोडक्ट्स हम उठाते हैं और वी गेट, ओ माय गॉड, दे थॉट ऑफ एवरीथिंग, they are so nice. Then bad design is information overloaded. Too much information, whether it's a website, whether it's a manual, हम फेंक देते हैं, पढ़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, रख देते हैं. That is bad design. Superfluous is just opposite of unobtrusive. Superfluous मतलब it's boasting of lot of features, showing lot of buttons and so on, not thought through, complicated, boring and not friendly. Again, just opposite of the principle that we saw in a good design. Another beautiful quote to refresh you on this journey while we are just about to conclude it in next few minutes. If you never change your mind, why have one? Mr. Bono says, क्या कर mind को frozen रखना है? If your mind is not fluid,
if your mind is not flexible enough to adopt design or to think of future or to imagine different possibilities or adopt different solutions, then why have one? It's a funny or sarcastic, you can say, sarcasm. I don't know. To our rigidity of the mind, rigidity of our minds. Then lastly but not the least, we see the benefits of design thinking. कोई बोलेगा अरे इतना सब रामायण करने का इससे होता क्या है, इससे क्या होगा? तो डिजाइन थिंकिंग से क्या होता है देखो अभी, इट्स वेरी वेरी पावरफुल. नाउ हियर यू सी द बिजनेस वैल्यू. यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखता है, आरओआई, रिड्यूस टाइम टू मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दी बनता है प्रोडक्ट. कोई बोलेगा अरे ज्यादा टाइम लगेगा, जल्दी बनता है इसमें. देन टैकल एंड फोरसी विकेट प्रॉब्लम्स. तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं. दे हैव touch points on multiple dimensions. Problems of pollution, for example, problems of creating a product that has to become a disruptive one, like iPhone disrupted everyone, all the phone market. There were Walkmans, but iPod still disrupted everyone, right? तो कितना well thought of बनता है वो. तो tackle and foresee wicked problems. Then save development cost, ROI बचता है. और just mind me here, these are not the only benefits. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 10-15 और भी मिल जाएंगे, बट जितने हम डाल सकते हैं हमने यहाँ पे डाल. So all these are benefits of using the design thinking process. Reduce meeting times, very very important. टाइम बचता है क्योंकि कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि कोलैबोरेटिव मीटिंग्स हैं सारे के सारे. टीम्स में डिवाइड कर दिया, चारों एक्सपीरियंस मैप बना रहे हैं, तो पता चला कि 50 सॉल्यूशन रेडी हो गए, 50 एक्सपीरियंसेस रेडी हो गए. एवरीवन ऑब्जर्व कस्टमर्स. जब लिखने बैठे तो हर एक का अपना अपना थॉट प्रोसेस है उसमें. सो यू एंड अप क्रिएटिंग डिफरेंट, seeing different insights in the same data. Same data will give you different insights because different brains are at work. Then improve customer retention and loyalty. जैसे मैंने बताया था पीछे, the Design Management Institute says that design thinking process following companies outperform other competitors, which don't do so by almost 220% year on year. Then increase productivity, participation and peer feedback. तो peer feedback मिलता है, लोग साथ में काम करते हैं, टीम जेलिंग होता है, लोग जानने लगते हैं, पसंद करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इटरेट करते हैं. देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाता है, एंड इस्टेब्लिश अ गुड कल्चर अराउंड द कंपनी एंड द टीम. देन फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इससे इनोवेशन का सबको चांस मिलता है. नहीं तो जैसे मैंने बताया था कि डिजाइनर्स ही बनाएंगे या आर्टिस्ट ही बनाएगा या ग्राफिक डिजाइनर ही बनाएगा, तो उसमें एवरीवन इज नॉट गेटिंग चांस. तो इवन इंजीनियर्स में भी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस एक्सपीरियंस मैप एट देयर ओन टाइम, एट देयर, और दे मे जस्ट राइट इट ऑन स्टिकीज, राइट? ऐसा नहीं कि डिजाइन ड्रॉ ही करना है, लेकिन they will participate. So it fosters a culture of creativity and innovation throughout the company. Then transform business model and organizational culture. तो इससे पूरा का पूरा आपका मॉडल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिजनेस मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंप्रूव होता है. देन फास्टर फीचर डेवलपमेंट, फास्टर टाइम टू मार्केट जैसे बताया, तो जल्दी होता है. प्रायोरिटाइज एंड डिलीवरी वैल्यू, वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस है ये. यू सी द प्रायोरिटीज, जैसे मैंने बताया था ना, प्रायोरिटाइज्ड गोल्स फ्रॉम द कस्टमर, पीछे एक स्लाइड में हमने देखा था. मेजरेबल प्रायोरिटाइजेबल गोल्स फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली. आपने 10 पॉइंट्स ले लिए कस्टमर से ही प्रायोरिटी भी ले लिया उसका, कि आपको क्या लगता है, मतलब 10 पॉइंट्स है, बट नंबर 1 पे कौन सा आएगा, 2 पे कौन सा आएगा, एंड हाउ विल यू मेजर देम, है ना? तो एंड देन यू विल डू द सेम प्रोसेस इन योर ओन टीम. तो टीम वाले भी फिर से रेट करेंगे, फिर से प्रायोरिटी करेंगे. सो यू एंड अप इन्वॉल्विंग द कस्टमर एंड सीइंग द थिंग्स फ्रॉम देयर, value driven, empathy driven. Then reduce meeting times and data driven decision making, very important. तो यहाँ पे कोई जैसे बताया कि no CEO और no product manager or engineering manager is taking all the decision. It's decisions taken by the data that comes from the customers, or by observing or monitoring start from the customers. ठीक है? Quickly, I'll not take a pause here. I'll just take a pause in the end. We'll see the applications. अब इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. So these are a lot of good names. आप देख सकते हैं लोगोज यहाँ पे. There is Google, Adidas, Airbnb, PepsiCo, lot of other names also on the slide. You can read through them. IBM, Uber, Orbital Lab, IDEO. IDEO is a very big company, very innovative company. Then Mayo, Disney, Stanford, BofA, there's another one, Bank of America, ABN AMRO. तो हर सेक्टर में देखो, यहाँ पे ब्रॉन देखो सबसे ऊपर लिखा है ना, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ब्रॉन हेयर ड्रायर्स एंड एवरीथिंग. Those were designed by Dieter Rams. So he worked with Braun for some time, and he ended up designing
products for Braun company, which became world famous. He designed gramophone, music box, Braun hair dryer, and so many others. Then PepsiCo, P&G, all these big names. All these companies value and have been deriving benefits from the design thinking process. तो ये सब लोग यूज करते हैं. ये सारे केस स्टडीज अवेलेबल हैं नेट पे. So all these companies in different sectors. Now again, not the only these, thousands of other companies are using. I have just put some names here to make you familiar. How powerful and popular this process is, this way of thinking now. Okay, with that we reach to the summary. कि क्या होता है ओवरऑल. हमने बहुत सारी चीजें सीखी आज. We saw about design, what is design. We understood what is the definition. We saw the history. Then entrepreneurial से कैसे relate करता है. लीन थिंकिंग और एजाइल थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क, क्या डिफरेंसेस हैं. हाउ डज इट रिलेट टू डिजाइन थिंकिंग and what are, then we saw the steps and the phases. We saw in various ways people use this process. We understood what each of these steps mean. And then we saw, last but not the least, we saw what is a good design, bad design, how bad design is overloaded, and how good design is unobtrusive. And then we saw in the end what are the benefits and applications of design thinking. To sum it up, it's an iterative collaborative process. It's a human-centric process to solve problems visually. Visually is very, very important. So as much as possible, they end up using tools like mind maps, experience maps, story maps, all kinds of maps. Typically used by stickies itself. Most of the times they use no finished drawings at all, but yes, some stickies and some creative ways of solving. Basically, design your way out of complex problems to deliver meaningful experiences at every touch points with customers. Touch point क्या होगा? Think of them as channels. Like you talk to customers on Facebook, you talk to connect to customers on emails, you connect with customers on phones, you connect with customers on, let's say, Twitter. Each of these are touch points, channels. Also, touch points are how it connects to the app. So each of the touch points in the app where users will interact. Design thinking ensures you are solving the right problems for the right people because you are iterative, because you involve customers from the beginning. And it helps to discover unmet needs. Why unmet? क्योंकि customers को भी नहीं पता होता कई बार मुझे क्या problem है. So unless you ask them, then they will get thinking and then they will come up with a lot of problems that they had, but they didn't know. So unmet needs. So you will probably get insights or new discoveries at every step, maybe, because of the nature of the process. Then helps us to co-create solutions rather than we creating and throwing it on their faces, slapping it on their faces. We co-create it with the customers. We bring them in, we talk to them, we work close to them, and then we bring up with something that is definitely going to please them because they have helped us derive the process. Okay, so that's some high level. We cannot summarize everything. We learned a lot of things, but this will give you a good summary. And there are some few references here. Not these ones only. So even for this session, a lot of other references were used. But these are some references. If some of you are interested in understanding this process more, या किसी को लगता है इस पे books पढ़ना चाहिए या और सीखना चाहिए, so these are some of the good books or references you can use. There is a book called as Disrupt. There is something called as Creative Workshop. Another is Serious Creativity by Bono, Mr. Bono. Change by Design. Then there is Hands-on Design Thinking. And there are many, many, many other books and courses and articles of this on internet. So with that, I will close off.